श्रीमद्भागवतम् ऐन्दवद् स्कन्दं 14வது अध्यायम्। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। स होवाच, य एष देहात्ममानिनां सत्त्वादिगुणविशेष विकल्पित कुशला कुशलसमवहार विनिर्मित विविध देहावलिभिर्वियोग संयोगात् यनादि संसारानुभवस्य द्वारभूतेन षटीन्द्रियवर्गेण तस्मिन् दुर्गात्ववद सुखमेन्वन्या पतित ईश्वरस्य भगवतो विष्णोर्वशवर्तिन्या मायया जीवलोकोऽयं यथा वणिक्सार्थोऽर्थपरः स्वदेहनिष्पादित कर्मानुभव श्मशानवत शिवतमायां संसारटव्यां गतो नाद्यापि विफल बहु प्रतियोगे हस्तत्तापोपशमनिं हरिगुरु चरणारविन्द मधुकराणुपदवीम् अवरुद्धे यस्यामुह वा एते षटीन्द्रियनामान कर्मणा दस्यव एव तेः तद्यतां पुरुषस्य धनं यत्किञ्चिद्धर्मौपैकं बहुकृच्छ्रादिगतं साक्षात् परमपुरुषात् आराधनलक्षणो योऽसौ धर्मस्थं तु सम्पराय उदाहरन्ति तद्धर्म्यं धनं दर्शन स्पर्शन श्रवण स्वादन अवघ्राण संकल्प व्यवसाय गृह ग्राम्योपभोगेन गुणात् स्याचितात्मनो यथा सार्थस्य विलुम्पन्ति अत च यत्र कौटुम्बिका धारपत्यादयो नाम्ना कर्मणा वृकशृगाला एवानिच्छतोऽपि कदर्यस्य कुटुम्बिन उरण गवत्संरक्ष्यमाणां मिषतोऽपि हरन्ति यथा हि अनुवत्सरं कृष्यमाणम् अभ्यदत्तबीजं क्षेत्रं पुनरेवावपनकाले कुल्मद्रुण वृथिभिर्गह्वरमिव भवत्येवमेव गृहाश्रम कर्मक्षेत्रं यस्मिन् हि कर्माणि उयुत्सीदन्ति यदयं कामकरण्ड एष आवसतः तत्र गतो तं शमशक समाप सदैर्मनुजैः शलभ शकुण्ठ तस्करं मुषगादि बिरुभरुत्य मान बहिप्राण क्वचित् परिवर्तमानोऽस्मिन् नद्वन्य विद्याकाम कर्मभिरुपरक्तमन साणुपपन्नार्थं नरलोकं गन्धर्वनकरम् उपपन्नमिति मिथ्यादृष्टिरनुपश्यति तत्र च क्वचिदात बोधक निभान् विषयानुपधावति पानभोजनव्यवायादि व्यसनलोलुपः क्वचित् शाशेष दोष निषदनं पुरीश विशेषं तद्वर्णगुणनिर्मितमति सुवर्णम् उभादित् सत्यग्नि काम कातर इवोल्मुख पिशाचम् अथ कदाचिन् निवास पाणियद्र विनाद्य नेखाद्म उपजीवनाभिनिवेश एतस्यां संसारटव्या मितस्ततः परिधावति क्वचिच्च वात्योपम्यया प्रमदया आरोहमारोपितस्ततो कालरजसा रजनीभूत इव साधु मर्यादो रजस्वलाक्षोऽपि दिग्देवता अतिरजस्वल मतिर्न विजानाति क्वचित् सकृदव गतविषय वैदत्य स्वयं
पराभित्यानेन विभ्रंशित स्मृतिस्तयैव मरीचितोय प्रायां स्थाने वा भीतावती क्वचित् विलुकजिल्लीस्वन वदति परुशरभसाडोपं प्रत्यक्षं परोक्षं वा रिपुराजकुल निर्भर्तिसितेन दिव्यदित कर्णमूलहृदयः स यदा दुग्धपूर्व सुकृतस्तदा कारस्कर काकदुण्डात्य पुण्यद्रुमलता विशोद बाणवधू भयार्थ शून्यन्द्रवीनान् जीवन्मृतान् स्वयं जीवन्म्रियमाण उपधावति एकता सत्प्रसङ्गानि कृतमतिर्यतकस्रोत स्खलनवतो उभयतोऽपि दुःखतं पागण्डमभियाति यथा तु परपादयान्त आत्मने नोपनमति तदा हि पितृपुत्र बर्हिष्मतः पितृपुत्रान् वा स खलु भक्षयति क्वचिता साध्यगृहं तावत्प्रियार्थ विदुरम् असोगदर्कं सोगाग्निना दह्यमानो भृशं निर्वेदम् उपगच्छति क्वचित् कालविषमित राजकुला रक्षसा बहृतप्रिय तमदनाशु प्रमृतक इव विगत जीवलक्षण आस्ते कदाचिन् मनोरथोपगत पितृपितामहाद्य सत्सदिति स्वप्न निर्वृति लक्षणम् अनुभवति क्वचित् गृहाश्रम कर्मचोदनादिभर गिरिमारु वृक्षमाणो लोकव्यसनगर्षितमना कण्टक शर्करा क्षेत्रं प्रविशन् निवसीदति क्वचिच्च दुस्सहेन कायापि अन्तरवह्निना गृहीतसारः स्वकुटुम्बाय गृह्यति स एव पुनर्निद्राज घरगृहीतोऽन्दे तमसि मग्नः शून्यारण्य इव शेते नान्यन् किञ्चं वेद सव इव बविद्धः कदाचित् भग्नमानदंष्टो दुर्जनदन्त सुखैरलब्धः निद्राक्षणो व्यतितहृदये नानुक्षीयमान विज्ञानो अन्तकूपेन्दवत्पतति कर्हि स्म चित्काममधुलवान् विचिन्वन् यदा भरधारभरद्रव्याण्य वरुद्धानो राज्ञा स्वामिभिर्वा निहत पतत्यपारे निरये अत च तस्मादु भयतापि हि कर्मास्मिन्नात्मनः संसारवपनमुदाहरन्ति मुक्तस्ततो यति बन्धाद्देवदत्त उपचिनन्ति तस्मादपि विष्णुमित्र इत्यनवस्थितिः क्वचिच्च शीतवाताद्य नेखाति दैविकबौद्धिकात्मीयानां दशानां प्रतिनिवारेण कल्पो दुरन्तचिन्तया विषण्णे आस्ते क्वचिन्मितो व्यवहरन् यत्किञ्चित् धनमन्येभ्यो वा काकिनी कामात्रमप्यपहरन् यत्किञ्चित् वा विद्वेषमेति वित्तशाद्यात् अध्वन्यमुष्मिन्निम उपसर्गास्तथा सुखदुःख रागद्वेष भयाभिमानप्रमादोन्मादशोक मोहलोपमात्सर्येर्ष्याव मानक्षुद्भिपासादि व्याधि जन्मजरा मरणादयः वापि देवमायया स्त्रिया गुजलतोपगूढः प्रस्कन्नविवेक विज्ञातो यद्विहारगृहारम्भः कुलहृदयस्तदा श्रयाव सक्तसुत दुहितृ कलत्र भाषिता वलोक विचेष्टिताप हृदये आत्मानम् अजितात्म परान्ते तमसि प्रहिणोति कदाचिदीश्वरस्य भगवतो विष्णोश्चक्रात्
परमान्वादी द्विपार्ता भवर्क कालोपलक्षणात् परिवर्तितेन वयसा रंहसा हरत आब्रह्म तृणस्तम्भादीनां भूतानाम् अनिमिषतो मिषतां वित्रस्त हृदयस्त मे विश्रमं कालचक्रनिजयातं साक्षात् भगवन्तं यज्ञपुरुषम् आनाधृत्य पाकण्ठदेवताः गङ्ग घृत्रभग वटप्राया आर्य समय परिहृता साङ्गेत्ये नाभिदत्ते यदा पाकण्डी बिरात्म वञ्जितस्तैरुरु वञ्जितो ब्रह्मकुलं समावसंस्तेषां शीलम् उपनयनादि श्रौतस्मार्थकर्मानुष्ठानेन भगवतो यज्ञपुरुषः आराधनमेव ततराचयन् शूद्रकुलं भजते निगमाचारो असुद्धितो यस्य मिथुनीभाव कुटुम्बपरणं यथा वानरजाते तत्रापि निरवरोध स्वैरेण विहरन्नतिकृपण बुद्धिर् अन्योन्यमुख निरीक्षणादीना ग्राम्य कर्मणैव विस्मृत कालावधिः क्वचित् द्रुमवतैः कार्तेषु गृहेषु रंस्यन् यथा वानरः सुददार वत्सलो व्यवायक्षणः एवमध्वन्यवरुद्धानो मृत्युग जप यात्तमसि गिरिगन्धरप्राये क्वचित् शीतवाताद्यनेकतैः विगबोधिकात्मीयानां दुःखानां प्रति निवारणे अकल्पो दुरन्त विषय विषण्ण आस्ते क्वचिन्मितो व्यवहरान् यत्किञ्चित् धनमुपयाति वित्तशाद्येन क्वचित् क्षीणधन शय्यासनाशनादि उपभोगविहीनो यावद प्रतिलब्ध मनोरथो भगदादाने अवसित मतिस्ततस्ततो अवमानादीनि जनादपि लभते एवं वित्तव्य तिशङ्क विवृद्ध वैरानुबन्धोऽपि पूर्ववासनया इत उद्वहति अथापवहति एतस्मिन् संसारध्वनि नानाक्लेशोपसर्गपादित आपन्न विपन्नो यत्र यस्तमुह वावेतरस्तत्र विसृज्य जातमुपपादाय शोचन्मुह्यन् बिभ्यत् विवदन् ग्रन्दन् संकृष्यन् गायनह्यमानः साधुवर्जितो नैव वर्तेत्यापि यत आरब्ध एष नरलोक सार्तो यमध्वन पारम् उपदिशन्ति यदिदं योगानुशासनं न वा एतद वरुन्धते यन्यस्त दण्डा मुनय उपशमशीला उपरतात्मान समवगच्छन्ति यदपि दिगिभजिनो यज्विनो ये वै राजर्षयत् किं तु परं मृते शयिरन् अस्यामेव मेयमिति कृतवैरानुबन्धायां विसृज्य स्वयम् उपसंहृताः कर्मवल्लीम् अवलम्ब्य तत आपद कथञ्चिन् नरकात् विमुक्त पुनरप्येवं संसारध्वनि वर्तमानो नरलोकसार्थम् उपयाति एवम् उपरि गतोऽपि तस्येतम् उपगायन्ति आर्षभस्येक राजर्षे मनसापि महात्मनः नानुवर्त्मर्हति नृपो मक्षिकेव गरुत्मतः यो तुस्त्यजान्तारसुतान् सुहृद्राज्यं हृतिस्पृशः जहौ युवैव मलवदुत्तम श्लोकलालस यो दुस्त्यजान् क्षिति सुतस्व जनार्दतारान् प्रार्थ्यां श्रियं सुरवरैः सदयावलोकां नैषन्त्रुपस्य तदुषितं महतां
मधुद्वित्सेवानुरक्त मनसाम भवोऽपि पल्कुः यज्ञाय धर्मपतये विधिनैपुणाय योगाय सांख्य शिरसे प्रकृतीश्वराय नारायणाय हरये नमयुत्युदारं हास्यन् मृगत्वमभिय समुदाजहार य इदं भागवत सभाजितावदात गुणकर्मणो राजर्षेन् भरतस्यानुचरितं स्वस्त्ययनम् आयुष्यं धन्यं यशस्यं स्वर्ग्याभवर्ग्यं वानुश्रोणोत् याख्यास यत्याभिनन्दति च सर्वा एवाशिष आत्मन आशास्तेन काञ्चन परत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे भरतोपाख्याने पारोक्ष्यविवरणं नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।